I was in US for 4 years, and then I returned for good in 2003. And from that day on, I thought that might as well. India needs more environmental engineers than US needs. So thought of setting up a career over here. अगर आप अमेरिका में है या तो आप यूरोपियन कोई कंट्रीज में, if you are staying there, if you have friends there, you can ask them. They are paying for their water. So अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं एक दिन मेरे फैमिली में अगर मुझे 150 रुपया देना है पर डे फॉर द फ्रेश वाटर, तो एनी इंडियन वुड थिंक कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू पेइंग फॉर वाटर. Hello everyone, welcome back to vyapaarjagat TV, and thank you so much for keep watching this particular series of video, which is titled as Agroteas Presents Talk with Greenpreneur. And friends, I was as yesterday I was talking to one of the expert in our this particular series, and as you know that we were talking about the future. We were talking about the future of this particular planet. We were talking about the future of this particular earth, and there are kind of comments that we are receiving जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप 2050 की अगर बात करें तो 2050 में शायद ऐसा हो कि अगर मतलब एक प्योर ऑक्सीजन लेने के लिए सबको ऑक्सीजन की टैंक जो है वो लेके घूमना पड़ेगा, या फिर अगर हम पानी की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि अब जब या आज की डेट पे पीने के पानी के लिए जितने पैसे देने पड़ते हैं वो मतलब हर एक चीज़ के लिए अगर आपको पानी चाहिए तो आपको उससे ज़्यादा पैसे देने पड़े, और मे बी वाटर विल बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड. सो देर आर सो मेनी थॉट्स, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन. एंड टुडे हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विवेक शेठ. ही इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियर. He has contributed a lot to save water, and उनका जो वेंचर है, उनका जो इनिशिएटिव है, they are talking about how we can save water, especially जो वेस्ट वाटर होता है जिसको हम ऐसा समझते हैं कि ये वाटर काम में नहीं आता है. सो विवेक जी एंड उनकी टीम जो है वो जो वेस्ट वाटर जो है उसको कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो काम करते हैं. सो विवेक जी, वेलकम टू व्यापार जगत टीवी, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड joining this particular show. Yeah, thank you so much, and hello everybody. Thank you so much sir, thank you so much. So sir, we want to understand about your background, and especially how it was all started. When you think about the sustainability and waste water treatment के बारे में आपने कब सोचा? मतलब basically, I'm a LD College of Engineering pass out. So I passed out in 1998. And I started my career. Basically, I was in US for 4 years, and then I returned for good in 2003. And from that day on, I thought that might as well. India needs more environmental engineers than US needs. So thought of setting up a career over here. And then I worked with a couple of good companies and distinguished consultants just to get a feel of, how Indian market works and how the Indian environment is as such. So from 2003, I'm returned for good. And then, after working for a while, a year or two, I started on my own. Initially, I was working more on the cleaner production activities. right. So which means that you save, basically you are preventing the water or anything, air or water or any kind of waste from getting polluted. In fact, you are saving the precious raw materials, the energy,
water at source. So that was initially I started with in India, and then I started the end of the pipe approach, which is the treatment itself. So because see, always the prevention is always better than cure. But then the circumstances, forced our company to also get into the wastewater treatment, basically on the treatment side, the air treatment, the wastewater treatment and all. Right. And we have supplied more than, I would say, 300 air pollution control equipment by far, and more than 450 wastewater treatment plants within Gujarat and even outside Gujarat. सुपर. सो सर, जो अभी का आपका जो वेंचर है थिंक ग्रीन एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो बेसिकली व्हाट आर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यू आर ऑफरिंग एज ऑफ नाउ? So as of now, what we have done is that we have, since I would say last 12 years or so, we have designed a package kind of a plant, be it treatment plant or sewage treatment plant or a grey water treatment plant. And we have a complete full set of manufacturing facility where we develop package fiber reinforced polymer FRP जिसे कहते हैं, पूरे FRP के plants. So what happens is that like you have heard the 3 R's, like you reduce, reuse and recycle. We have additional 4 S. So how we do it is that the S stands for space. So space की बहुत मारामारी रहती है. So we also have underground plants, and all our plants are so compact, so you can install it anywhere basically. Then the second S stands for the smell. तो हमारे जो plants होते हैं, they are pretty odorless. So you can have a plant, जैसे कि sewage treatment plant की बात करें तो they are installed everywhere. So now there's a compulsion that the builders, the contractors, the hotels, hospitals, industries, everybody needs a sewage treatment plant. Right. तो आप उसको बेसमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अंडरग्राउंड कर सकते हैं. यू कैन हैव अ कार पार्किंग और अ टेनिस कोर्ट ऑन टॉप ऑफ इट. So that is how we address the second S. The third is that it's very simple to operate, and the fourth S is the main for a country like India, कि उसमें हम लोग जो सेविंग करके देते हैं हमारे कस्टमर्स को. So how we do it is that even if I give a free design to our customer and he thinks that he can do it himself, still if he goes for our plants, he can easily save 30 to 40% on the overall capital cost. तो हमारे जो plants होते हैं, they are very, not only cost effective, it's a lifelong plant, they are portable, and at the same time उसका जो operation maintenance होता है वो eligible होता है कि you are always encouraged to operate it on a daily basis. So it is just a myth that people feel that कि भाई ये plant हमने डाला और फिर बाद में इसको कौन maintain करेगा. Nobody does that and ये बहुत expensive. It's just a myth. So we are trying day by day harder and harder to come out of that myth, to basically make people aware कि ऐसा कुछ होता नहीं है. It's just that ये एक भ्रम है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर आंसर यू हैव मेंशन लॉट मेनी थिंग्स, और लोगों को ये बिल्कुल आपने बताया कि मेंटेनेंस जो है वो एक हेडेक लगता है, क्योंकि ये जब एक बार लगा दिया तो लगा दिया, बट उसके बाद में उसको मेंटेन कौन करेगा. तो आपने बताया कि इट्स वेरी नेग्लिजिबल कॉस्ट में इसको मेंटेन किया जा सकता है. एंड आपने बताया कि ये अभी गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस और हेल्थ केयर सेगमेंट में. तो विवेक जी ये बताइए कि आप ये जो भी आपकी जो भी सर्विसेज है, आपने जो भी पैकेजेस बनाए हैं, वो अभी व्हाट इज द टारगेट मार्केट एंड हु इज योर आइडियल क्लाइंट? See, target market is the entire world, I would say. But अगर हम इंडिया की ही बात करें तो it would be fair to say that India needs a lot of such plants, because see at the end of the day I feel के यहाँ जो जिस तरीके से हम वाटर का यूजेज करते हैं, right, and the way we look at water, because water is something that we take it for granted, जैसे एयर को हम लेते आ रहे हैं. And in a country like India, I would say that see, basically we aren't paying enough for the water, the raw water or the fresh water. So I'll just give you an example. अगर आप अमेरिका में है या तो आप यूरोपियन कोई कंट्रीज में
if you are staying there, if you have friends there, you can ask them. They are paying for their water. So अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं एक दिन मेरे फैमिली में अगर मुझे 150 रुपया देना है पर डे फॉर द फ्रेश वाटर, तो आई वो एनी इंडियन वुड थिंक कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू पेइंग फॉर वाटर। नाउ जस्ट थिंक कि 150 रुपया यूएस में और यूरोप में तो कोई पे कर ही रहा है। तो आप, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं कितना पे कर सकता हूँ। तो अभी बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे स्टेट्स है इंडिया में कि जहां ग्राउंड वाटर, बोर वाटर इज सिंपली टोटली नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज यू कांट यूज द नेचुरल रिसोर्स जस्ट लाइक दैट। ये जो जैसे कि वंस यू हैव अ लैंड, पीस ऑफ लैंड एंड यू हैव अ बोर, तो पीपल थिंक दैट if you have a borewell in your premises, it is your property. Water is not your property. Basically जो खींच रहे, जो एक्वीफर में से आप पानी ड्रॉ कर रहे हो, that belongs to the country government. So what happens is that we take water for granted. अगर मैं बोलूं कि अगर हमको पर डे 15 रुपया मैं पे करूंगा to get the fresh water for my family, तो most now what has happened is many parts of India they have already started paying 15 rupees, if not 150. अगर मैं 15 रुपए भी पे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वाटर टोटली फ्री मिल रहा है, तो मुझे ट्रीटमेंट भी उसको करने के लिए जब जरूरत आएगी, एट सम पॉइंट यू आर गोइंग टू ट्रीट इट, तो मुझे ये बर्डन लगेगा। सो माय मेन मैसेज इज दैट व्हाई वेट फॉर समथिंग टू हैपन। जैसे कि if you wear just a 5 rupee mask, you can prevent COVID maybe. If you wear a helmet, maybe you can save a life. अभी जब कोविड हो जाता है या तो आदमी एक बार एक्सीडेंट से गिर जाता है, then he is ready to spend lakhs of rupees just to save his life. तो similarly, why wait for that time कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, and then we are ready to spend lakhs of rupees. ऐसे लोगों को जैसे कि डिजीजेस है, you have water shortages, you have lot of issues associated with that which we don't realize at this point in time because we take water for granted. So what we have done is कि अगर मैं 1 रुपया भी पे नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि ऑलरेडी इंडिया में लोगों ने पे करना चालू कर दिया है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज चार्जिंग 15 और 20 रुपीज फॉर 1000 लीटर्स ऑफ वाटर गेटिंग प्रोक्योर्ड ऑन अ पर डे बेसिस। तो हम लोग जो ट्रीट करते हैं उसमें केवल आधा पैसा लगता है, विच मीन्स इट इज ओनली 5 रुपीज फॉर 1000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कांट वी पे जस्ट 5 रुपीज? 5 रुपीज कैरीज एक्चुअली नो वैल्यू, इट इज जस्ट अ माइंडसेट दैट वी आउट ऑफ इट। अगर मैं 150 रुपया दे रहा हूँ, मेरे महीने का पानी मेरे पूरे फैमिली का ट्रीट हो जा रहा है। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ माइंडसेट। 150 से तो कहीं ज्यादा हम लोग जस्ट एक डिनर लेने जाते हैं तो 2000 रुपया हो जाता है। सो आई थिंक वी जस्ट नीड सम मोर अवेयरनेस ऑन द सब्जेक्ट। समझ गया मैं। So sir, I think again in this particular detailed answer you have asked my 2-3 questions. So मैं just वो 2-3 क्वेश्चन आपको करता हूँ, उसमें if you have anything additional to add तो आप बता सकते हो। So my next question was actually what is वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसको मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है एक्चुअली, प्रोसेस क्या होता है उसका। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हाई देयर इज अ नीड टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वाटर और स्पेशली द वेस्ट वाटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ योर कंपनी कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकल वाटर। सो मेरे ख्याल से आई थिंक यू हैव आंसर्ड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड प्लीज ऐड। Yeah, so basically coming to wastewater, see any water basically anthropogenic emission कहते हैं, any water through which gets wasted through a human activity can be termed as wastewater. तो wastewater के कई types होते हैं, like if you are running a factory, let's say you have a textile process house, you have a pharma engineering company, तो वहां से जो effluent निकल रहा है, वहां से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, इनफैक्ट फ्रॉम द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। बेसिकली वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। अगर आप एक हाउस होल्ड की बात करते हैं या तो एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑफिस, सो द वाटर दैट कम्स आउट ऑफ दैट विच इज अ डोमेस्टिक इन नेचर, उसे हम सुवेज कहते हैं। सो सुवेज कंप्राइजेस, सो जैसे कि
bathing hai, toilet hai, kitchen hai, any kind of water that comes from a household to Right. combined it is called a sewage. If I Okay. remove the the toilet part in it, it becomes a grey water. So waste water के कहीं प्रकार होते हैं, but at the end of the day, through human activity, you are generating some waste water. करेक्ट. ओके. एंड सर मतलब कई बार ये भी मानना है कि ये वेस्ट वाटर जो है उसको, जैसे आपने मेरे ख्याल से ऑलरेडी आंसर कर दिया ये क्वेश्चन भी, कि जहाँ पे ट्रीटिंग वेस्ट वाटर इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल. तो व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्यूज अबाउट इट? Yeah, so again, I would like to say the same thing. कि cost effective में the way we do it, if I tell you that you are spending only half पैसे for a liter of water on the treatment part, तो वो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है. अगर आपके घर में से 1000 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है और मैं बोलूँ कि उसका कॉस्टिंग आएगा ₹5, तो आई थिंक ₹5 इन टूडेज टाइम इज जस्ट it's a peanut महंगा होगा उससे शायद. So what I'm trying to convey is that it's just a mindset. जैसे कि हम लोग कहीं एक्सपेंस ऐसे कर देते हैं कि जिसमें कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भी we do it. But and we should not wait for a day जहाँ हमारे water crisis होगा, या तो there will be epidemics and pandemics and all. So why wait for such a thing? Because when we waste water, be it industry और डोमेस्टिक अपना हाउसहोल्ड है, तो फाइनली वेयर डज द वाटर गो? सो इट गोज इन द रिवर्स फाइनली. तो हम लोग अगर इतने जो भी गवर्नमेंट के प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, फाइनली ये प्लांट का जो पानी है, द डिस्चार्ज ऑफ सच प्लांट्स, दे अल्टीमेटली गो इन द रिवर वेयर एवरीथिंग इज डाइल्यूटेड. But at the end of the day, you are spoiling the rivers. Finally, where does the river water go? It goes in the estuaries and finally to the ocean. तो हम जब रिवर का पानी बिगाड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स कि जो लोग रिवर का यूज करते हैं फॉर वॉट एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड फार्मिंग एंड ऑल, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पॉल्यूटेड पानी से हमारे ये क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे अगेन वी आर नॉट हेल्पिंग अवरसेल्व्स. So again, I would say it's just a myth. We have to come out of it, and we are not spending that much. तो अगर थोड़ा हम ओपन माइंड रखते हैं, सी अगर हम बात करें, a question which you have not asked, but I would still like to say couple of minutes. कि जैसे I have heard many people saying I want to contribute to environment, and how can I do that? So the first thing that comes to the mind is planting a tree. तो हम कितने ट्री प्लांट करेंगे और फिर कितने ट्री को अडॉप्ट करेंगे और कितने हम ट्रीज को हम उसको आर वी इवन विटनेसिंग द ग्रोथ ऑफ दैट ट्री? एक बार प्लांट कर दिया तो हो गया. सो देयर आर मेनी अदर वेज वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट, वाटर बीइंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन, व्हिच इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि आप प्रिवेंट ही कर रहे हैं. व्हाई वेस्ट वाटर? तो आपको बाद में ट्रीट करना पड़े. बट इफ एट ऑल लेट्स से कि हमने पानी जो भी वेस्ट कर दिया, तो उसको ट्रीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. we have very simple solutions and you can treat it in absolutely a very cost effective manner. तो you are always tempted कि भाई अगर मुझे ₹5 स्पेंड करना है for 1000 liters, it is not unaffordable for me. So ये मैं ऐसे ही एक दिमाग में लेके घूम रहा था कि बहुत महंगा पड़ रहा है, let me not install a plant or let me bypass it. So it's very achievable and very simple, very easy. Super. So sir, I mean, you have very vast experience into this particular domain, and your background itself is into the environmental engineering. So now we want to know that what is your larger goal or vision? My company's larger goal is that we want to reach out to the maximum people possible, right. Make them aware, install our plants wherever we can, finally run our plants on daily basis. We can provide manpower, we can train people if they want to run it themselves, but we want to try and reach more and more people so that we can make them aware. हो सकता है कि भले वो हमको प्रीफर करे ना करे, बट एटलीस्ट टू कम आउट ऑफ दैट मिथ के एक ट्रीट करना वो
आप एनवायरमेंट को ऐसे ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो बाय स्पेंडिंग वेरी लिटल और नेग्लिजिबल आई वुड से. तो देयर आर मेनी वेज वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट तो एनवायरमेंट के लिए. And so basically we would like to travel everywhere and do such things where we can be helpful of in any kind. Absolutely, absolutely. And sir, the current scenario जो है उसको लेके, where do you see India after 10 years, maybe let's say after 10 years, where do you see India after 10 years as far as sustainable development is concerned? Because आज की डेट पे हर कोई सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, हर कोई ग्रीन की बात कर रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट. सो वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट इज इट just a buzzword, or practically people are talking about, I mean people are actually working towards this particular things. So what are your views, please? So I'll be very honest with you. There are people who are genuinely concerned for environment. They want to do things, and with full heart they gather people और उनको aware भी करते हैं. Right. But when we talk about sustainable development, I think कि वो अंदर से आना चाहिए. Ultimately, what happens is that you are forced to go for such systems. आप sustainable development कर रहे हो with a thought, with a pure intention. So it should come naturally because it's very easy, very simple, and you can definitely go for that. और green हम क्यों नहीं हो सकते? But why wait for a day कि जहाँ हमको जैसे कहते हैं कि जख मार के sustainable होना पड़े? Because हमको डंडे से काम नहीं करना है. सही बात. वरना finally see, आप देखोगे तो now people they stand on the red light. पहले ऐसा नहीं होता था. तो why they are standing? Maybe awareness, but maybe we don't want to pay those 500 rupees. So हमको why reach to that point where वैसे भी डंडा पड़े और हम sustainable की बातें करें? I would still go with such people के जिनके दिल में sustainability है और वो अपने आप ही इसको आगे एक लेवल से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, सुपर आंसर सर. सर, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन which again related to the sustainability, or especially in your business, we want to know that what are the challenges you think when we talk about the sustainability. So what are the challenges you see and how someone can overcome from those challenges? The main challenge that we see is that people are still, some people, I would say not all, but still there is a kind of resistance. Even if there is a compulsion to install, there is a bit of resistance to install plants or the appropriate size plants to run the plants. And we are trying our best to make them aware कि इसमें कुछ नहीं है. It's very easy. You can do it. That is our main challenge. But once they meet us and once we explain them as to how everything goes, because क्या होता है कि आप एक माइंडसेट के साथ बैठे हो तो you need to थोड़ा आइडिया शेयरिंग होता है. And if you can see from some other person's perspective and you are open, so we see that change happening and people are they become very willing to operate plants and install plants. So I see that positive change happening, and that is why we try to reach more and more people. Super. Okay, so sir, now I have we are I have taken a lot of time. Now I will not take much, but I have one personal question about you, wherein when you are not working, so what are the set of activities you are doing? Because you are you are the naturepreneur, you are the greenpreneur in our words, right? So when you are not working for this particular, I mean in your office, so what are the set of activities you are doing? Yes, so I play cricket. I go to gym. Wow. Health का भी ध्यान रखना पड़ता है तो so that physically fit है तो जान है तो जहान है. So so working on those two aspects. और साथ साथ में if I get some time we travel also. Wow. Superb. So, sir, one more question. What is something, one skill which you are learning as of now, or you are trying to improve that particular skill? I'm rather a man of R&D. So I never think that I know it all.
So every day is a fresh day for me. I try to learn new things, and yeah. So I always like to go for something which I don't know, Wow, or wow. yeah, Superb, superb. It's a great thing, sir. And sir, now the last but not least is what message do you want to convey to our viewers, to the citizens of India? my main message is that, first of all, thank you very much for hearing me out, and I would say that जो नेचर एनवायरनमेंट हमारे लिए जो कर रहा है उसके सामने हम तो 1% भी नहीं कर रहे. सो जस्ट गो फॉर इट, ट्राई टू हेल्प एनवायरनमेंट एज मच एज वी कैन. वरना वी डोंट वांट के एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि वहाँ जहाँ वी स्टार्ट रिग्रेटिंग. And my main message would be that we must all respect nature and try to help as much as we can. That's really a great message. I mean, to give respect to the nature, because आपने जैसे बताया कि आप जो नेचर दे रहा है उसका 1% भी हम नहीं दे रहे हैं, right? And I'm sure it has to be a balanced relationship, because if we are expecting something from the nature, then it is our moral responsibility, it is our duty to give back to the nature, to the earth, to the planet. And it was great talking to you, sir. Thank you so much for your time, and thank you so much for sharing the entire journey of yours. And I am sure this particular show is having multiple lessons where the viewers will take some of the takeaways out of this particular session. So once again, thank you so much, sir, for joining this particular show. Thank you. And hello everyone. So as you have seen that we have talked to the greenpreneur, and we are again going to talk with a lot of other greenpreneurs, as we are on mission to enhance life of 1 million entrepreneurs through various activities. And if you have not subscribed vyapaarjagat TV yet, so please do subscribe vyapaarjagat TV and stay tuned for our next session. Thank you so much. Have a great time. सपना देखें हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दे, कोई सपना देखें हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दे। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, हर व्यापार को दे पहचान। हर व्यापार को दे पहचान।